सरमायाकारी के फरोग और पायदार मुस्तकबिल की तश्कील के लिए मुकालमा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। मुस्तकबिल में सरमायाकारी से मुतालिक इक़दामात के हवाले से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आला सतह वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की कॉन्फ्रेंस के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रूसी फेडरल असम्बली की फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर वैलेंटीना मितोयोंको की इस्लामाबाद में वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का रूसी वफ़द के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम। तजारत सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुश्तरका कमीशन का दिसंबर में होने वाला इजलास ताउन को वुसअत देने में अहम साबित होगा। वज़ीर आज़म का रूसी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। मुल्क भर से अदालत उज़्मा के 4000 से ज़ायद वकला हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर के ओहदे के लिए मियां रऊफ अता और मुनीर अहमद निज़ाम के खात्मे के लिए यौम तशक्कुर के तौर पर कराची में पुरअमन रैली। आईनी तरमीम ने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जबर तरक्याती मनसूबों का बुनियादी नुक्ता शहरियों को बाइख्तियार बनाना है। हर शहरी को बराबर के मौक़े फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। खुसूसी बच्चों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम तरजीह है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत फोकल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन का इजलास। वफाकी वज़ीर का पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की कारकर्दगी और मालियाती डिसिप्लिन पर इजहार तशवीश। एक हफ्ते में पोस्टल सर्विस के लिए हंगामी बुनियादों पर मालियाती प्लान तरतीब देने की हिदायत। पाकिस्तान पोस्ट की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। अब्दुल अलीम खान। SIFC के ताउन से FPR की डिजिटाइजेशन के लिए टास्क फोर्स की तश्कील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर गजा और लबनान के मुसलमानों के लिए इमदादी सामान भेजने का सिलसिला जारी। 15 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17वीं खेप कराची एयरपोर्ट से रवाना। इमदादी अशिया में तरपाल, खैमे, खुश्क खुराक, गर्म कपड़े, गोश्त, खुश्क दूध, तैयार खाना और अद्वियात शामिल। गजा में सहूनी फौज की जारियत शुहदा की तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। काबिज़ अफवाज का शिमाली गजा का मुहासरा जारी। 24 रोज़ में 1000 से ज़ायद शहादतें। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा पर भी पाबंदी। आलमी बरादरी की मज़म्मत। इसराइल की मशरक़ी लबनान के इलाके बैलक में बमबारी, 60 शहरी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। जनूबी लबनान से इसराइली इलाकों पर रॉकेट फायर। यूरोपीय यूनियन का लबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में लबनानी वज़ीर आज़म नजीब महकाती की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। मशरक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। मुनासिब वक्त पर इजरायली हमले का जवाब देने का हक रखते हैं ईरानी मंदूब। खित्ते में हमलों का तबादला नहीं चाहते। मजीद किसी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी मंदूब का खिताब। इसराइल की मदद करने पर रूसी सफीर की अमरीका पर तनकीद। मणिपुर एक बार फिर लहू लहू। मोदी सरकार खामोश तमाशाई, हालात मजीद कशीदा। बीजेपी के तीसरी बार इक़्तिदार के बाद अक़लियतों का जीना मजीद मुश्किल। 2023 से अब तक 237 अफराद हलाक, 60,000 बेघर। कारोबारी मराकज़ और इबादत बेहतरीन खातून फुटबॉलर का एवार्ड। लगातार दूसरी मरतबा स्पेन ही के मिडफील्डर एताना बॉमेटी ने जीत लिया। और अमेरिकन फुटबॉल मेजर लीग सॉकर ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस क्वार्टर फाइनल्स के प्लेऑफ मरहले में FC सिंसिनाटी ने न्यूयॉर्क सिटी को 1 गोल से मात दे दी। मैच का वाहिद गोल यामिल असद ने किया। वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस प्लेऑफ में लॉस एंजलिस FC ने वैंकूवर व्हाइट केप्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 8वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के लिए 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। कॉन्फ्रेंस आज से रियाज में शुरू हो रही है। अपने 2 रोज़ा दौरे सऊदी अरब में वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के है, जबकि उनकी सऊदी अरब की आला क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। रिपोर्ट करेंगे आगा मसूद खालिद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के हवाले से दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म रियाज में 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। लामहदूद आफाक आइंदा कल की तामीर के लिए आज सरमायाकारी के मौजू पर मुनक़िदा 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मुमालिक शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में शरीक मुमालिक अपनी मईशत की खसूसियात पर रोशनी डालते हुए सरमायाकारी के फरोग और पायदार मुस्तकबिल के लिए मशावरती अमल का हिस्सा बनेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में मसनूई जहानत और पायदार तरक्की के हवाले से दुनिया को दरपेश मसाइल के हल से मुतालिक गुफ्तगू और मशावरत होगी। 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब में वज़ीर आज़म की सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मतवक्के है। मुलाकातों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूदा 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखसूस तिजारत, तवानाई, मादिनियात, ज़राअत और दिफा के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर आए दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रूसी फेडरल असम्बली की फेडरेशन कौंसिल की स्पीकर वैलेंटीना मैतोयोंको ने इस्लामाबाद में वफ्द के हमरा मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने रूसी वफ्द के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम करते हुए इसे पाकिस्तान और रूस के माबैन पार्लिमानी ताल्लुकात की मजबूती की जानिब एक अहम कदम करार दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रूसी आला क़यादत की जानिब से हालिया दौरों की बदौलत पाकिस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती और इस्तेहकाम खुशाइंद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की वसी इस्तेदाद मौजूद है, जिससे इस्तिफ़ादा करके दोनों ममालिक के अवाम की तरक्की के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिसंबर 2024 में मुनक़्क़िद होने वाला पाकिस्तान और रूस मुश्तरका कमीशन का इजलास दोनों ममालिक के माबैन ताउन को वसअत देने का अहम मौका साबित होगा। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए बैंकिंग चैनल्स की मजबूती और पाकिस्तान और रूस के दरमियान मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के एक जामे रोड मैप की तश्कील पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने रवा माह के आगाज़ में वज़ीर मवासलात की क़यादत में 17 रुकनी पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के वफ़द के दौरे रूस और पाकिस्तान रूस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत को दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए खुशाइन करार दिया। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ साथ उन्हें जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत का पैगाम भी दिया। और नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 800 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद एक मरतबा फिर 91,000 की नफसियाती हद अबूर करते हुए 91,700 पर पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। ज़मीर, बताइएगा कि कैपिटल मार्केट में तेज़ी के क्या असबाब बताए जा रहे हैं? जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और बेहतरीन दिन, कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है और 100 इंडेक्स जो है इस वक्त तकरीबन 950 पॉइंट के इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 91,155 पर पहुंच चुकी है। मार्केट में इस तेजी की असल वजह वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब है, जिसमें वो एक बड़ी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जिसमें उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान नई सरमायाकारी ढूंढने के हवाले से कामयाब होगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि मुल्क के तमाम मुआशी अशारिये जो हैं वो काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त शो कर रहे हैं। हमारे रिजर्व स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, हमारा रुपया तगड़ा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रही है, हमारे इम्पोर्ट्स भी जो है कंट्रोल में है, हमारी जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी 2 माह से सरप्लस है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव शो हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है पुरुमीद हैं और पुरएतमाद हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 4 नवंबर को स्टेट बैंक की जानिब से जो ज़रिए पॉलिसी अनाउंस की जाएगी, उसमें भी उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट्स जो है उसमें कमी की जाएगी, जिसके बाद उम्मीद यही है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 17.5 इस वक्त बरकरार है, उसके बाद कम होकर तकरीबन 15.5 पे पहुंच सकता है, जिसके बाद मुल्क में जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उसको काफ़ी फ़रोग हासिल होगा। खास करके बिजनेस कम्युनिटी को इसमें काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने बिजनेस को फैलाने के हवाले से। माहिरीन का कहना है कि ये पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी चल रही हैं। IMF की रिपोर्ट्स भी पाकिस्तान के हक में काफ़ी अच्छी आ रही हैं कि जहाँ पे उनकी इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की काफ़ी तारीफ़ की जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि अगर इन पॉलिसीज़ का तसलसल जारी रहा तो मुल्क की मईशत जो है मज़ीद मुस्तहकम होगी। जी,
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضمیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ابھی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن انتخابات کے حوالے سے ہونے والی پولنگ کی۔ آسما جہانگیر اور حامد خان گروپ میں مقابلہ ہے۔ آسما جہانگیر گروپ کی طرف سے میاں محمد رؤف عطا، جبکہ حامد خان گروپ کے منیر احمد کاکڑ صدر کے امیدوار ہیں۔ آسما جہانگیر گروپ کے سیکرٹری کے لیے ملک زاہد اسلم اوان، فائنانس سیکرٹری کے لیے چودھری تنویر اختر امیدوار ہیں۔ حامد خان گروپ میں سیکرٹری کے لیے سلمان صدیقی، جبکہ فائنانس سیکرٹری کے لیے میر اورنگزیب امیدوار ہیں۔ 4021 وکلاء نئے صدر، سیکرٹری اور دیگر عہدیداروں کا انتخاب کریں گے۔ لاہور میں سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ اب تک کتنے ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں یہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ لاہور میں اس وقت سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ آسما جہانگیر اور حامد خان گروپ میں مقابلہ ہے۔ آسما جہانگیر گروپ کی طرف سے میاں محمد رؤف عطا، جبکہ حامد خان گروپ کے منیر احمد کاکڑ صدر کے امیدوار ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، اسی حوالے سے ہمارے نمائندے نوید حیات ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ نوید، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، لاہور میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ الیکشن کے لیے جو پولنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ بار کے 8 عہدوں پر اس وقت 17 امیدوار جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ ملک بھر کے سپریم کورٹ بار کے 4021 وکلاء جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور اس وقت سب سے زیادہ ووٹر جو ہیں وہ لاہور سے ہیں، جہاں پر 1414 جو وکلاء ہیں وہ اپنا رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس وقت 200 سے زائد ووٹرز جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ پروفیشنل گروپ اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے حمایت یافتہ امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ بار کی صدارت کے لیے جو ہے پروفیشنل گروپ سے منیر احمد کاکر اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے رؤف عطا کے درمیان جو ہے 1 to 1 مقابلہ جاری ہے، جبکہ سپریم کورٹ بار کے دو جو اہم سیکٹری ہیں ان کے لیے سلمان منصور اور زاہد اسلم اوان جو ہے وہ مد مقابل ہیں۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری سمیت دیگر جو شہر ہیں وہاں پر پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور پولنگ کو شفاف بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور پولنگ کا عمل جو ہے وہ 15 منٹ لیٹ شروع ہوا تھا۔ 8:45 پر جو ہے پولنگ کا عمل شروع ہوا تھا۔ اسی طرح 5:15 پر پولنگ کا اہتمام ہوگا، جس کے بعد جو ہے وہ امیدوار جو جیتیں گے ان کا اعلان کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوید حیات، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے بلوچستان کی ہائی کورٹ بلڈنگ میں بھی پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان سے سپریم کورٹ بار کی پولنگ کے لیے رجسٹرڈ وکلاء کی تعداد 263 ہے۔ اب تک 50 سے زائد ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ صدر کی نشست کے لیے بلوچستان سے پروفیشنل گروپ کے منیر احمد خان کاکڑ اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے محمد رؤف عطا کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ پاکستان یکجہتی کونسل کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ یکجہتی کے لیے یوم تشکر کے طور پر کراچی میں پرامن ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے پر قوم کو مبارکباد دی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے عوام کے منتخب نمائندوں کو جبراً گھر بھیجنے کی روایت کو دفن کر دیا۔ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس کی تقرری کے لیے اہلیت اور قابلیت کو معیار بنانے پر سراہا گیا۔ شرکاء نے سودی نظام کے خاتمے پر حکومت سے تشکر کا بھی اظہار کیا۔ ریلی میں سپریم کورٹ کے سب سے قابل جج جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بننے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ شرکاء نے یحییٰ آفریدی کے حق میں بھی نعرے لگائے۔ ریلی کا مقصد ان ترامیم کا خیر مقدم اور چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی کو اپنے نئے عہدے پر مبارکباد اور ان سے اظہار یکجہتی تھا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ہمارے ترقیاتی منصوبوں کا بنیادی نقطہ شہریوں کو بااختیار بنانا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ہر شہری کو برابر کے مواقع فراہم کرنا ہماری حکومت کی ترجیح ہے۔ خصوصی طلبہ کو الیکٹرک ویل چیئرز دینے کا منصوبہ شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جامعات کو پابند کیا گیا کہ وہ ویل چیئر ریمپس کی تعمیر کو یقینی بنائیں۔ ویل چیئرز ملنے کے بعد طلبہ کی خوشی دیدنی تھی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے امن و امان کی صورتحال پر توجہ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے کی خراب صورتحال کے باعث خیبر پختونخوا کے تاجر اور عوام نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ آپ ان کی کمائی سے اسلام آباد پر چڑھائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سیاسی مقاصد اور اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ریسکیو 1122 کی گاڑیاں استعمال کی۔ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ گورنر کے پی نے کہا کہ پارا چنار، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو سمیت مختلف علاقوں میں سیکیورٹی اہلکار قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔
वफाकी वज़ीर निजकारी, सरमायाकारी और मवासलात अब्दुल अलीम खान के ज़ेर सदारत फोकल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन का इजलास हुआ। इस इजलास में पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने एक हफ्ते में पोस्टल सर्विस के लिए हंगामी बुनियादों पर मालियाती प्लान तरतीब देने की हिदायत दी और कहा कि हुकूमती फंड्स पर इन्हिसार करने की बजाय अपने वसाइल खुद पैदा करना होंगे। जिस इदारे के अखराजात ज़्यादा और आमदन कम होगी वो नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि फंड्स में इजाफे के लिए मुल्क भर में GPOs और डाकखानों में नादरा और पासपोर्ट काउंटर्स बनाएंगे। गैर ज़रूरी अखराजात कम करके सरकारी इदारों को खुद इन्हिसार बनाना होगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि डाकखाने का रिवायती निज़ाम बदल चुका है, अब नए तकाज़ों के मुताबिक ही काम करना होगा। और FBR की डिजिटाइजेशन के लिए भी टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। टास्क फोर्स को FBR के ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करके इसके निज़ाम को बेहतर बनाने का वसी मैंडेट दिया गया है। SIFC के ताउन से टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए हुकूमत ने 10 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दी है, जिसका मकसद FBR को जामे तौर पर डिजिटलाइज करना है। टास्क फोर्स के अहम मकासद में FBR के डिजिटाइजेशन के लिए पॉलिसी की सतह पर मदाखलत, तमाम डाटा की ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर हल नाफिज करना और सूबाई रेवेन्यूज़ अथॉरिटी के साथ ताउन शामिल है। इसी तरह होल सेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए खुदकार सप्लाई चेन का निज़ाम नाफिज करना और मरबूत ऑटोमेशन के जरिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तरक्की भी इसका हिस्सा है। हुकूमती इक़दाम का मकसद SIFC के ताउन से वफाकी और सूबाई टैक्स हुकाम के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देना है, जिससे एक ज़्यादा मरबूत कौमी टैक्स हिकमत अमली तश्कील दी जा सकेगी। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने कहा है कि नर्सिंग की तालीम में सरमायाकारी हमारी सेहत में सरमायाकारी है। हमें नर्सिंग इदारों को आला मयार की तालीम फराहम करने के लिए ज़रूरी वसाइल और मुआवनत से लेस करना होगा। इस्लामाबाद में फ़ज़ाइया कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज एयर यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सरकारी और निजी दोनों शोबों में नर्सिंग कॉलेजेस और इदारों का थर्ड पार्टी ऑडिट करने की हिदायत की थी, ताकि बेहतरीन बैनुल-अक़वामी तरीक़ों के मुताबिक मयार का पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि ऑडिट का मकसद नर्सिंग की तालीम को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक लाना है। हुकूमत नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने कहा कि नर्सिस की कमी पर काबू पाने के लिए निजी नर्सिंग स्कूलों को शाम की शिफ्ट करने की इजाज़त देने की हिदायत की गई है। आलमी माहिरीन के साथ ताउन करके हम अपने नर्सिंग प्रोग्रामों को बढ़ाने के साथ साथ मजबूत नर्सिंग वर्क फोर्स बना सकते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर गजा और लेबनान के मुसलमानों के लिए इमदादी सामान भेजने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इमदादी सामान की 17वीं खेप आज कराची एयरपोर्ट से रवाना कर दी गई है। इस मौके पर एजाज़ी कौंसल जनरल लेबनान नजीब बेग और MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार भी मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कराची से अपने नुमाइंदे ज़ीशान अहमद खान से। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से गज़ा और लबनान में फंसे निहत्ते मुस्लिम उम्मा के बहन भाइयों की मदद का सिलसिला न सिर्फ जारी है, बल्कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ फ़ोरम पे भी उन जंगबंदी के ख़िलाफ़ और जंगबंदी के लिए और इस बर्बरियत और जारहियत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई है। और उनका कहना है कि पाकिस्तान जो हमेशा अमन का पैगाम देता है और जंग किसी भी सूरत हाल में जो है वो मसले का हल नहीं है। इस वक्त भी जो है वो 17वीं खेप जो कराची से जो रवाना की जा रही है, जो कि बैरूत के लिए पहुंचेगी और 15 टन इसमें इमदादी सामान है। इसके साथ हमारे साथ वो NDMA का पूरा अमला मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त एजाज़ी कौंसल जनरल लेबनान नजीब बेग साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। ये खेप के बारे में बताएंगे जिस तरह इमदादी सिलसिला जारी है हुकूमत की जानिब से? जी, जैसे हम सबको पता है जो सूरत हाल है वहाँ पे उसके हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो जिस हद तक भी लेबनीज़ गवर्नमेंट एंड लेबनीज़ जो पॉपुलेशन है जो सफ़र कर रही है ट्रेमेंडसली, जो मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इस्लामाबाद से भी फ़्लाइट्स गई हैं, कराची से भी ये फ़्लाइट जारी है, इसके बाद भी कुछ फ़्लाइट्स हैं जो प्लान्ड हैं। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट। Honorable parliamentarians from Pakistan and friendly countries, Parliamentary Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Dr. Shazra Mansab, distinguished guests, foreign delegates, former ministers, I can see few here, from जान साहब बैठे हैं, उधर और साथी बैठे हुए हैं, and ladies and gentlemen, distinguished guests, Assalamu alaikum and very good morning. It is indeed a great honor
to attend this event commemorating the 75th anniversary of the founding of People's Republic of China. I had made a commitment before I left for SMAO. Prime Minister couldn't go. It was the Commonwealth Heads of Government meeting right in the middle of Pacific. As my brother Senator Mushahid Hussain said, it took me 32 hours, 24 hours of flying hours and 8 hours of waiting in transit, because you have to change twice. But since I had made commitment, I was required to actually divert myself from the last stop in Dubai to Riyadh this morning. So there is a financial investment initiatives conference, but since I had made a commitment, so I got leave from Honorable Prime Minister on telephone, who has left after my arrival for Riyadh. He will be representing Pakistan. So it's indeed a great day, I would say, and a great event which has been planned. I extend my heartfelt congratulations to the Chinese government, the Chinese people, the institute, its management, all participants here. It's a wonderful day, it's a historic day from Pakistan and Chinese friendship point of view. The establishment of the People's Republic of China marked a transformative moment in the world history, ushering in an era of progress and strength for a great nation. Under the leadership of Chairman Mao and his revolutionary comrades, the Chinese people waged an unparalleled struggle for freedom, dignity, and self-respect. Kindly spare some moment, some time, and reflect. We don't have much difference in our age of the two countries. And Honorable Senator Mushahid Saab mentioned, how and which countries China's tried to follow in the beginning, which included Pakistan model as well. There's a separate discussion sometime, what goes wrong in this country. I think we will certainly have another discussion, but with reference to today's event, I would say this monumental journey inspired by Chinese, countless nations across the world who actually wish to now follow China. Over the past 75 years, New China has created a remarkable course, reaching unprecedented milestones in every sphere of life and contributing to a better world. Again, one of the Honorable Speaker has explained the different phases. Mushahid Saab says he went first time 50 years ago when he was in FC College. Yes. So, those of you who have been to China in different phases, and particularly in the last few years, I think the speed of revolution and transformation, what I have witnessed in last couple of decades, is of the light speed. It's unbelievable. You simply cannot comprehend that such a speed can be possible in certain country. We have been witnessing all leg pulling from a certain part of the globe. His Excellency Ambassador said they're second biggest economy. Absolutely right. I have no doubt they're going to be the biggest economy in due course. All tools have been used against China. Those who observe very closely, starting from the tariff impositions from 25 to 100% on different items, semiconductors, electric vehicles. But mark my words, I have a very clear, the speed I have seen in Chinese development and progress testifies that it's not too long when China will become the super economic power. Absolutely.
Ladies and gentlemen, through the visionary leadership of the Communist Party of China, the country has not only eradicated extreme poverty, as explained and given numbers by Honorable Ambassador here, but also elevated the quality of life for its citizens and pioneered advancements across various sectors. Now, at one time, Chinese labor was considered to be very economical. I don't use the word cheap. And that's why the many industries of the world actually located from the West in China. You will be surprised to know that the per capita income and the living style has gone so high in the last decade. Pakistan labor has become cheaper than China now. Nepal labor has come cheaper than China. Bangladesh labor has come cheaper than China. That's why there was a huge discussion just 6-7 years ago of relocation of a lot of Chinese labor-intensive industries in these countries. Pakistan was one of the best candidates. I'll come to that in a minute. The sadful story of Pakistan. We take off and we just fell repeatedly. So that was the best time, 2016-17, when Jetro was saying that Pakistan is likely to be the second choicest place for foreign direct investment. When the international rating agencies were frequently upgrading your ratings. When the Morgan Stanley and the other countries were saying that forget about neighbor, look at Pakistan for investment. Anyway, it's never too late. So historically, I think we have still space, in my opinion. I'm very optimist. Some people say I'm born an optimist, but my experience also says optimism and hope must prevail, because we have not seen once, but multiple times Pakistan rising, and then the political instabilities and the domestic conspiracies just take Pakistan to a negative direction. From space exploration to artificial intelligence, medical science, green development, and cutting-edge technologies, China's transformation from an agrarian society to an economic powerhouse of the world has reshaped the global economic landscape. With its GDP risen over 17 trillion US dollars today, Chinese journey stands as a testament to its unyielding pursuit of prosperity. Excellencies, ladies and gentlemen, Pakistan sees China as a key factor for peace, stability, and fairness in world affairs, and I mean it, what I'm saying. China's peaceful rise has contributed to stability in global political and economic landscapes, enhanced the structure of global governance. It has strengthened the role of multilateral diplomacy, and there's so many positive things you can see and experience when you study the China's 75 years of growth. Importantly, China's proactive leadership in addressing climate change has galvanized international climate action. With its investments in renewable and green energy, as well as its pledge to achieve carbon neutrality by 2060, China sets a standard for sustainable development that resonates globally. Those of you who have traveled to China in the last few years, just about 7-8 years ago, when you would go to Beijing, there would be so much pollution you can see. In just 5 to 6 years, I've just been in the last 2 years few times, and I'll be going soon again, Excellency. I'll be joining President of Pakistan in his dialogue with President Xi on 7th and 8th. That's another reason why I'm here. And it's amazing. It's all clear, blue sky now in Beijing. It's really impressive that if you
intend to do something, if you have a resolve, you can make it. And China has shown it. I was really happy and pleasantly surprised in such a short time, just 4 or 5 years ago, and now how Beijing, environment issue has totally disappeared. China's role as a harmonizer on the global stage is equally commendable. Rather than stoking conflicts, China has consistently worked to cultivate harmony among nations. I'm sure China could have reacted to the unreasonable tariffs levies in the recent few months. I was actually in Beijing when I read that news. I mean, imagine 25% tariff to 100% tariff. I don't know what would you write, Dr. Ikram Saab, on this, whether it is a fair play in the word or not. But that's what happened. I read in China, I was on an official visit with Prime Minister. And I couldn't believe that, this can also happen. This is nothing but politics. An unfair way to stop somebody to be achieving, which in my opinion they will achieve one day. Yes. The humbleness, the hard effort, the commitment, the dedication with which the Chinese leadership work, I don't see it's going to be too long away when they will be achieving this thing. This dedication, as I said, to peaceful coexistence is evident in its historic mediation role between, couple of countries of this global south. They have been extreme rivals. China had played a great role and they had brought them closer. You see, this is the role of leadership, and I must compliment what China did in this region. Pakistan deeply values China's support in addressing long-standing issues, including the issue of Jammu and Kashmir as well as Palestine. As responsible for the Foreign Ministry of Pakistan, I also assure you once again that Pakistan also is absolutely, has been, is and will always be firm on one China policy. Excellencies, ladies and gentlemen, the past 7 decades of Pakistan-China friendship are marked by a shared history of trust, resilience, and solidarity. Born of visionary leadership and strengthened by generations of Pakistanis and Chinese alike, our friendship has flourished as an enduring partnership. And this government intends to take it to the next level, inshallah. As all-weather strategic cooperative partners, Pakistan and China have stood by each other both during times of peace and in times of difficulty. Be they natural disasters, economic disruptions, or geopolitical shifts, China-Pakistan friendship has been consistent, steady, and that's why they say all-weather friends. One of the most notable achievement of this partnership is the China-Pakistan Economic Corridor, which His Excellency, the Ambassador, has pointed out. Let me share with you the history. Pakistan was suffering by 2012, 18 hours of load shedding. I'm sure you would have forgotten by now. We have a very short memory. 18 hours in the urban areas and 20 hours in the rural areas, average. Pakistan had already held the elections, 2013, May 2013. We had won the elections. And Chinese premier were visiting Islamabad, and invited Mr. Nawaz Sharif, as the obviously known to be the next Prime Minister of Pakistan. I accompanied him, and so did the current Prime Minister Shehbaz Sharif,
we held a meeting in Serena, Islamabad. The Chinese premier asked Mr. Prime Minister, he addressed him already, Mr. Prime Minister, tell us what can we do for you. And Mian Sahab said that please help us in getting rid of this load shedding in Pakistan. You would be amazed to know when you analyze, I can see some people here, I can see Rana Sahab is here, Mehtab is here, they all know the background. So you see the maximum investment out of the CPAC was for generation of electricity projects in the private sector. There has been a lot of malafide propaganda from the containers and otherwise. In the powers of echelon, they really believed that thing. And as a finance minister, I confronted those all. तो बड़े महंगे लोन दे दिए चाइना ने 8% लोन है ये लोन्स हैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं and I confronted them. Even today the numbers are available. The government of Pakistan out of 34 billion of CPAC phase 1 only borrowed $6 billion US. The rest was investment loans to the private sector for the power generation projects. 3 billion for Multan Sakar motorway. It was commercially not viable, couldn't be done on a BOT basis. So state has to come in. You can't have Peshawar to Islamabad motorway, Islamabad to Lahore motorway, Lahore to Multan motorway, and Multan Sakar can't be because there's not enough traffic and doesn't make commercial sense. This is where the state has to come in. So that was the sector which was financed by China under CPAC, 3 billion. The other 3 billion was the Gwadar related projects. And the average cost was less than 2%. It won't be appropriate for me to tell who the big powers I had to confront. And thanks God, with the change of government, and after spending 1 year, when people went to negotiate IMF program, then the finance minister had to make public statements in Washington. Ishaq Dar was right. It was less than 2%, and that was investment, not loans. So see, we should think of Pakistan first, and should not come to the petty politics when it comes to Pakistan. So CPAC, I think, is a wonderful gift from China. It's a flagship project of the Belt and Road Initiative of President Xi. It has not only transformed Pakistan economy by enhancing infrastructure and energy capacity, but also demonstrated that interstate relations based on mutual respect and cooperation bring substantial benefits to both nations. As a symbol of bilateral cooperation, CPAC underscores the enduring strength and depth of Pakistan-China's relationship. Ladies and gentlemen, Pakistan remains fully committed to expanding CPAC to its next level. In the recent meetings of Prime Minister Shehbaz Sharif with the Chinese leadership in China, which I also participated, China and Pakistan have agreed to take CPAC to the next level, what we call upgradation of CPAC or CPAC phase 2. We have to move into now the second phase, deepening our collaboration in trade, industrialization, digital technology, agriculture, and green and renewable energy investments. China offered that we can send 1,000 agri senior students to China. They can study how we can increase our yield per acre, how can we reform our agriculture following the Chinese model. So the government is totally focused, and the actions are on. The shared commitment was further strengthened during the visit of, as I said, Prime Minister Shehbaz Sharif in June this year,
followed by recent visit of Premier League to Pakistan. These visits reflect our country's resolve to elevate this partnership to new levels. Now, the visit I'm referring to, after 1997, Pakistan did not have any meaningful multilateral event in Pakistan. It's not very good. Maybe one dignitary, one prime minister, one president, two or maximum three, 2019, 2021, ECU. But not 1997 level of multilateral event took place in 27 years in Pakistan. Alhamdulillah, we mobilized SCO. You have been witness. People still didn't try to leave it in peace, try to sabotage it. But the SCO went, alhamdulillah, absolutely marvelous, and there is all praises coming to the visiting dignitaries, including Chinese Premier. I'm sure Ambassador, is privy to that recognition. So we have to hold these events regularly. But, the constraints were very serious. I had to concentrate a few weeks totally on this event, and alhamdulillah, all guests went happy. Chinese Premier was there, Russian Premier was there, a number of Central Asian states, all those members attended, and of all the countries which the speculation was will not represent. If you recall the last year Goa, some negative episode, even the Indian Foreign Minister visited Pakistan and participated positively in SCO. You see, this is what we should be focusing. So, as China marches forward towards its second centennial goal of achieving the great rejuvenation of the Chinese nation, Pakistan stands at a pivotal moment in its journey towards sustainable and inclusive growth. The trust and support that define our relationship will continue to guide us, enabling deeper strategic cooperation grounded in shared values and principles. Today, as we celebrate China's 75th anniversary, the achievements of the historic journey and the steadfastness of our unique friendship, we reaffirm our commitment to advancing our partnership with renewed vigor. United by shared aspirations, we pledge to uphold peace, foster prosperity, and build a brighter future for our two people and the world. Honorable two speakers had pointed out few things. I'll be failing in my duty not to briefly touch upon them. Mushahid Sahab has a great memory, I must compliment. The incident he quoted was 2nd of December 1998. He was asking me, was it 2nd or 3rd? I said 2nd of December. Because Prime Minister Nawaz Sharif was accompanied by Sartaj Aziz Sahab as Foreign Minister, me as Finance Minister, Mushahid Sahab as Information Minister, and Shahbaz Sahab as the Chief Minister Punjab. But also, Riaz Khokhar Sahab was also there. The diplomatic community, we should not miss out their number. The other side was Madeleine Albright. Please, I'm talking from memory. Foreign Minister, Sandy Berger, the National Advisor, Security Advisor. No, Rubin, my counterpart, the Treasury Secretary, and then Talbot and Colin Firth. So we had interesting episode because Pakistan was not getting its money, F-16. Musharraf Sahab could not get it. Bibi couldn't get it. Alhamdulillah, that was a historic day. But rest, you will have to wait for Mushahid Hussein's book, which he keeps promising he will quote the entire episode which happened. It will be there in fully. So, you have to see the detail. But Alhamdulillah,
it is a duty to fight for our country, for a national interest. No matter which building, where you are, who are you facing, you have to have the courage to talk and claim for your right assets. So, Mujahid sahab, काफी देर हो गई है, 1998, and now we are 26 years. I'm still waiting for the book, because the first round was the political, which was F-16, the new. It was official visit of Prime Minister Nawaz Sharif, and the second round was economic. So the IMF revival. So this was a very historic visit. Dr. Ishfaq Sahab might have some idea of what happened. He was with me those days. I remember you drafting an article for me, From Crisis to Hope. Am I right? Okay. Dr. Ishfaq is also a nationalist. Yeah, that's why I'm, recognizing Dr. Ishfaq by name. Ishaq Sahab bhi baithe hain. Ishaq Sahab bhi, before the coup, we were thinking to taking him as Governor State Bank. Lekin the competition was between him and Shaukat Aziz Sahab. The coup would have, luck for both. One became the State Bank Governor, the other became the Finance Minister of Pakistan. But they were both interviewed by me for the post of State Bank Governor. Sorry? तो आगे चलते हैं जी. शौकत साहब इज गुड फ्रेंड यार. ये सारे छोटे लाइटर, जो दुनिया छोटी है, हमें लाइफ बड़ी छोटी सी है. Gaza and Afia Siddiqui. Two things you have raised. I have to respond. Afia Siddiqui Sahaba, again, Mushahid Sahab knows, we have done our best. And in the restricted meeting with President Obama, that's the last attempt Prime Minister Nawaz Sharif made. And I accompanied him in that meeting, I and Sartaj Sahab. We requested for, on humanitarian grounds, to get Afia released and sent back to Pakistan, but somehow we were told it's not possible. I didn't give up. Before the tenure of, in 2016, that the tenure of Democrat government was over, I had engaged the current Secretary of State, who was at that time Deputy Secretary of State, Tony Blinken. And at the classified places, my conversations would be available, because that was recorded by Dr. Waqar Masood, who was my finance secretary. I did my best for this girl of Pakistan to come back, but anyhow, the word is difficult. Let me tell you the latest. We have not given up. I have just got, as Foreign Minister, a letter signed by Prime Minister Shehbaz Sharif asking, or I would say requesting, let's use the word proper, the President of US POTUS that, they do give a number of pardons before leaving, that if this can be done. So we have done it. Just before coming here, I had Attorney General with me and the Law Minister. I'm sending a delegation of 3 people to go and meet the parliamentarians, the congressmen, the senators in US to lobby. Because we will do our best, but that's all, we should be doing. Excellent. On the issue of Gaza, I think the word international law and order is collapsing. I don't mince words, I talk straight. May not be very good quality in a diplomatic responsibility, but you have to. Just in last 48 hours, I have made it sure that I put on record of the Commonwealth that there is a need for reform in the multilateral development institutions, charter. The developing country needs do not have enough supply under the existing system from the Betterment Institution and others. And everybody agreed with me, and it was part of the, the record which the Commonwealth Secretariat will issue in due course. So
Same happens to Gaza. All the resolutions of the Security Council on Gaza, by the resolutions of the OIC in Gambia, I represented Pakistan on this subject there in the heads of government OIC meeting in Gambia a few months ago. There was a special meeting of D8 in Istanbul, same issue, followed by another meeting hosted by King of Jordan, President of Egypt, UN Secretary General. I represented Pakistan there. We voiced everywhere. I think we may be one of the rare countries who have vocally spoken in favor of Palestine. And I think it is a responsibility as part of the Ummah. This genocide must stop. The war crimes must operate. The International Court of Justice decision has been put in the bin, which has categorically stated it is plausible genocide. 48,000 innocent people have died, including majority of women and children. 80,000 are injured, and there's a complete vanish of the Gaza place, followed by what is happening in Lebanon. What Pakistan is doing, we are playing our proactive diplomatic role. Many things you can't make too much public. This is a standard norm. That's why you don't see me, by the way, too much now in talk shows. Spokesperson speaks on behalf of the MOFA. Hopefully, Parliamentary Secretary Dr. Shazra Mansab will be doing that job. But we raise this issue at every important international forum. Even in Commonwealth in Samoa, I made it sure that this item is raised. But what Pakistan is doing, now let's come to that. सिर्फ बातें करने का तो कोई फायदा नहीं ना. Talk is not enough. We have to do something practically. We have already sent 10 big consignments of relief to Gaza. Previously, we were sending through Egypt. When I attended a few months ago the conference in Amman on Gaza, I negotiated with Jordan because that is a safer place and safer route to dispatch these goods. So we have been doing it. Number two, an NGO from UK of the professionals, doctors, they approached me that can we bring the final year students of medical. There are no teaching hospitals now, no medical, it's all gone by the bombardment. So can Pakistan accommodate them? You will be happy to note I have made arrangements with all the private medical colleges and the public sector colleges, and 190 students would be, as a first batch, coming to Pakistan, Palestinians who will be completing their rest of their medical profession and their degree in Pakistan. The first batch has reached in Lahore. Next few batches are expected in Islamabad, and hopefully once all the first total batch arrives, I have intention to probably invite them and just have a talk, maybe media is also there, just to encourage them. They lost everything. So all I want to assure you that Gaza is on our radar, and surely we will do everything which is possible. Latest attack on Iran, that is the new edition. The sad story is when the Iranian president was to be sworn in, Prime Minister Shahbaz Sharif was again overcommitted. Task was given to me. I represent Pakistan. I went there. ये अलग बात थी कि बजाय एक दिन का ओवरनाइट जो कि suggested था, I reduced it to 14 hours trip. I reached after the airport to the parliament. I had about 30 minutes margin. So I attended the investor ceremony. So life is short. That's why I said that we should always consider this.
I was sitting, the Turkish foreign minister was sitting, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of UAE were sitting. The ceremony was to start in about 5-6 minutes. Ismail Hania walks in. He was also invited there. And this clip was run globally after what happened there at that time. So 4 of us were chatting, 3 of us, sorry. UAE DPM was sitting, but Foreign Minister Hakan, my dear brother, and myself and Ismail Hania, and a very good exchanges. After that, there was a gap of 1 hour, there was a dinner, and then I just rushed back to the airport and reached Sagar again 4 o'clock by the way in the morning. When I landed at Islamabad, I was told that Ismail Hania has been killed. Now this is life. So, you know, our support is very much there. Now the latest attack on Iran, we have been informed that Arab Summit would be taking place, most likely on 11th of November. Islamic Summit or Arab Summit? Arab Summit, not OIC, Arab Summit. So I'm sure Prime Minister and myself, we will represent Pakistan on that occasion. We'll voice out everything we can. On the security issue, I'm sorry I'm taking a lot of your time. Foolproof security. I'm talking about for our brothers and sisters from China. China leadership, I won't precisely name, in our recent meetings, Chinese are very clear. No matter how lucrative an investment is anywhere, if the security issue is there, they don't send Chinese personnel. Am I right, Ambassador? Your country is the only exception. This is what Chinese leadership told to Prime Minister of Pakistan in my presence.